A big political war has erupted over BJP's Tajinder Bagga's arrest by the Punjab police on Friday. Mohali court has issued fresh non-bailable warrant against Tajinder Bagga. The Judicial Magistrate has asked the Cyber Crime Branch, Mohali, to arrest Bagga and produce him before the court. The judge also observed that the arrest of Bagga was necessary in the interest of justice and to facilitate the investigation. According to Punjab police sources, the team of cops once again reach Delhi to arrest Bagga on Sunday. Meanwhile, BJP held a protest outside Delhi Chief Minister Kejriwal's residence over Bagga's arrest. Majinder Singh Sirsa slammed Kejriwal and said the Punjab government is trying to harass a Sikh for no reason. Goa Chief Minister Pramod Sawant and BJP Yuva Morcha Tejasvi Surya met Bagga at his residence. Goa Chief Minister called his arrest kidnapping by the AAP government. Tejasvi Surya hailed the party leaders for backing party Karyakartas, and Bagga was arrested by goons in uniform, according to him. AAP has hit back at the BJP, fired Gunda party jibe at the Saffron party. लास्ट टाइम उन लोगों ने कोई कागज नहीं दिखाए थे, लेकिन इस बार शायद आ रहे हैं कागज लेके। अब वकील के पास है, अब वकील बताएगा ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो वकील के पास है। जब बग्गा जी अभी इस वक्त कहाँ पर है? वकील के पास है। वकील के पास गए कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए। कागजी उसको समझने, नोटिस को समझने कि नोटिस में क्या क्या है, नोटिस को हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, इस हालात में हमें क्या करना चाहिए। A massive political war has erupted over BJP's Bagga's arrest. BJP staged a protest against Chief Minister Kejriwal's house and called Bagga's arrest kidnapping by the Punjab police. Aam Aadmi Party hit back at BJP and fired a Gunda party jibe. Here's the complete report. Political showdown over Tajinder Singh Bagga's arrest. Drama is escalating. BJP leaders led a march to Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal's residence on Saturday. The protesters tried to break the barricades put up by the police, but were foiled by the security personnel. The party fielded its Sikh leaders to target Aam Aadmi Party. तुम एक सिख बच्चे को टॉर्चर करना चाहते थे, एक सिख बच्चे को ऊपर जाति करना चाहते थे, शारीरिक उसको तकलीफ देना चाहते थे। आम आदमी पार्टी बताए क्या गुनाह किया कि उसको पुलिस मारेगी, पीटेगी? जिस प्रकार से कल तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट किया गया और उसको वहां पर दस्तार नहीं बांधने की बग्गा जी को, बड़ा स्पष्ट है ये सिक्खी का अपमान है, ये पुलिस के प्रोटोकॉल का इशू नहीं है। जो लोग आए थे वहां पर वो बग्गा को नंगे सिर लेकर गए। BJP senior leaders including Goa Chief Minister Pramod Sawant and BJP Yuva Morcha Chief Tejasvi Surya flocked to Bagga's residence to show solidarity. दिल्ली पुलिस को बिना इन्फॉर्म करते हुए यहाँ से उसका अपहरण किया, मैं तो अपहरण ही बोलूंगा क्योंकि यहाँ से अपहरण किया, और जिस तरह की ट्रीटमेंट उन्होंने बग्गा के पिताजी को दी, केजरीवाल जिस तरह की ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसकी मैं निंदा करता हूँ। Fascist tendencies of Arvind Kejriwal stands exposed yet again. What we witnessed yesterday was kidnapping of a political activist by goons in uniform. Democracy won yesterday, constitutionalism won yesterday, rule of law won yesterday, fascism lost, Gundagardi lost. Jammu Kashmir ki Rajneeti. Aam Aadmi Party hit back at the BJP, calling it a Gunda party. जिस तरीके से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके अपनी कठपुतली की तरह नचा के एक अपराधी को छुड़ाने का काम किया, इससे फिर से भाजपा ने एक बार साबित किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे लफंगों की पार्टी है, जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुस के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को पीटता है। एक आदमी जो बंगाल की हिंसा फैलाने के मामले में आरोपी है, सीरियल ऑफेंडर है, बहुत सारे इसके ऊपर केसेस हैं। जज साहब ने कायदा ऑर्डर पास किया है। Meanwhile, Mohali court has issued a fresh arrest warrant against Bagga.
The Judicial Magistrate has asked the Cybercrime Branch, Mohali, to arrest Bagga and produce him before the court. Punjab Police could be visiting Delhi looking for Bagga once again soon. With Munish Pandey, Tejashri Purandara, Ashwarya Paliwal and Amit Bharadwaj in Delhi, Bureau Report, India Today. A fresh controversy has erupted in Telangana over a candid video of Rahul Gandhi that has gone viral on social media. In the video, the Congress leader can be seen asking a very innocuous question to his party workers, "Kya bolna hai?" before an address. Here is more about what's going on and how the BJP is hit back. First, Rahul Gandhi's video from Nepal nightclub. And now his video from poll-bound Telangana. The BJP is in no mood to give Congress MP Rahul Gandhi leeway. BJP IT cell chief Amit Malviya tweeted a video of Congress MP Rahul Gandhi in which he can be heard asking his party workers what exactly he has to talk about during the rally in Telangana. So what is the main theme today? क्या theme क्या है? क्या exactly speech में क्या बोलना है? यही off करिए please. So what is the main theme today? क्या theme क्या है? क्या exactly speech में क्या बोलना है? यही off करिए. The BJP leader, in a scathing attack, said this happens when one does politics between foreign trips and nightclubbing. BJP spokesperson Shehzad Poonawalla also slammed Rahul Gandhi for Congress's hollow rhetoric. The video, perhaps shot and leaked by a Congress leader who's disillusioned by the lack of connect, lack of commitment and lack of seriousness of Rahul Gandhi towards the people of Telangana. This also means that all the commitments made by the Congress party in its rally, particularly by Rahul Gandhi, have no meaning. They are empty words, they are hollow rhetoric. The ruling TRS too didn't miss the opportunity and lashed out at Rahul Gandhi. The video of Rahul Gandhi at the airport exposes that Rahul Gandhi had no clue about what he had to speak at the Warangal meeting, which explains that Congress party, which was claiming of Warangal declaration for the farmers, which is absolutely farce and bogus. There is no declaration because Rahul Gandhi himself has no clue about what he has to address. Thank you. Thank you so much. The Congress, left red-faced, jumped to Rahul's defense. These kind of videos always emerge, and when the Prime Minister stepped out and asked the media and he couldn't speak coherently, you know, this kind of a video also came. So ultimately the point is that videos will come and videos will go, but onlookers will know what the truth behind the video is and what essentially has happened. And like I told you, Mr. Rahul Gandhi has asked a question. What's wrong in asking a question of the state leadership? Even AIMIM chief Asaduddin Owaisi did not mince his words to attack Rahul Gandhi. तो जब आपको ये नहीं मालूम कि तेलंगाना की जनता को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों आपका साथ दें, आप बिल्कुल जहन आपका एम्प्टी है, आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे और कैसे टीआरएस से मुकाबला कर पाएंगे आप? With Congress hoping to raise its stake in battleground Telangana and BJP all ready to dent it, the war for Telangana has already begun. With Ashish Pandey in Hyderabad, Bureau Report, India Today. What is the main theme today? A massive controversy has erupted in Karnataka ahead of the 2023 assembly polls as senior BJP leader and MLA Basanagowda Patil Yatnal has claimed that the chief ministerial post was an offer for 2,500 crore rupees and ministerial berths for 100 crore rupees in Karnataka. Here's a complete report. Sensational allegations. The ED, the CBI or the central agency is still not opened their mouth. They should have immediately taken up a case suo motu. Counter charges and a massive political controversy.
a ruling party MLA has dropped a big political bombshell, triggering more Nataka in BJP's sole southern bastion. Ahead of the 2023 assembly polls, senior BJP leader and MLA Basanagowda Patil Yatnal has claimed that the chief ministerial post was on offer for 2,500 crore and ministerial berths worth rupees 100 crore in Karnataka. ಈ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಲ್ಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಡ್ರ. ಹಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೈ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ 2,500 ಕೋಟಿ. While Chief Minister Basavaraj Bommai remained mum on Yatnal's claims, former Chief Minister B.S. Yediyurappa said that the High Command would take cognizance of the matter. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. The opposition was quick to react to Yatnal's sensational claims. Targeting the state government over the charges, the Congress demanded a probe into the charges. It is not a statement of an ordinary street vendor or a small worker. A former union minister, former MLC, for a sitting MLA has said this. Why? The income tax, the ED, the CBI or the central agency is still not opened their mouth. They should have immediately taken up a case suo motu. The Congress party has demanded investigation into the whole allegations of CMC being sold for 2,500 crore and has demanded that the MLA who made the statement should be investigated and called for investigation by the Anti-Corruption Bureau. The BJP, however, has said that they will issue a show cause notice to Basanagowda Yatnal and seek his reply and then will take a further action. Nagarjun Dwarkanath for India Today. The controversial Gyanvapi Mosque Ma Shringar Gauri case gets further intricate after hearing the application of the Muslim slide for the removal of the court commissioner. The civil judge senior division court has reserved the decision for the time being. It is known that court-appointed Commissioner Ajay Mishra and the panel did not conduct the videography survey of the complex. The Gyanvapi Mosque shares a boundary wall with the famed Kashi Vishwanath temple. Day one of the survey and videography witnessed high-voltage drama outside the Kashi Vishwanath Gyanvapi Mosque complex. A war of slogans ensued between Hindus and Muslims as the court-appointed team reached the premises to conduct the survey. Meanwhile, you've got Asaduddin Owaisi, who called the survey an open violation. BJP sided with the court's decision and warned the ones who are protesting. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेट है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग तक आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है।
वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, वो दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जहां विवाद होगा वहां न्यायालय होगा और न्यायालय जो कहे उसको सबको मानना होगा। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लाठी और पत्थर मत चलाइए, ज्ञान चलाइए, बुद्धि चलाइए, डेटा चलाइए, सत्य चलाइए। और ऐसी स्थिति में जो ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं वो न्यायालय का विरोध कर रहे हैं, और जो न्यायालय का विरोध करेगा वो भरेगा।